अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप सब खैरियत से हो बेटा। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट रेट ऑफ चेंज, रिलेटिव change, connected change. So we can use many words for this topic. Before this, I already done differentiation of simple polynomial, composite polynomial, ln, exponential function, trigonometric functions. ये हमने सब कर लिए हैं। तो जिसको वी डन डी वाई बाई डी एक्स के रिप्रेजेंट हमने किया था डी वाई बाई डी एक्स, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं सब कुछ। तो आज इससे रिलेटेड इसकी एप्लीकेशन बेसिकली हम कर रहे हैं। दिस इज एप्लीकेशन ऑफ दिस पार्ट डी वाई बाई डी एक्स का। तो इसमें जो है, बिफोर दैट यू मस्ट नो व्हाट इज रेट, व्हाट इज चेंज। तो एक्चुअली आप देखें, अगर यू हैव द एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड बाय, दिस इज एक्स एंड वाई, ये हमारा कोऑर्डिनेट है एक्स। अब दिस बिकम, अगर ये अब मूव करके यहाँ आ जाता है दिस पॉइंट, तो ये एक्चुअली दिस बिकम चेंज, ये चेंज आ गया हमारे पास। टू चेंज है, तो y में जो चेंज आ रहा है दिस इज कॉल्ड इन 1 सेकेंड, तो दिस इज कॉल्ड चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू टाइम। दिस dx अपॉन dt मीन्स चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और dy बाई डी एक्स है चेंज इन y विद रिस्पेक्ट टू x। इनको हमने कनेक्ट करना है, वी हैव टू कनेक्ट देम। तो दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज बेसिकली। अब इसकी जब एप्लीकेशन करूंगा, वी स्टार्ट सम क्वेश्चन, तो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर देन दिस। तो रेट ऑफ चेंज सिंपली ये कर देख लें, अगर आप कोई जार फिल कर रहे हैं या फिलिंग जार विद द वाटर, और इट्स 25 ml जार, तो यू पुटिंग 25 ml वाटर इन दिस एंड इट टेक्स 5 minutes to fill it. तो रेट बिकम 25 डिवाइड बाई 5 इज 5 ml पर मिनट। तो इसका रेट हो गया हमारे पास। सिंपली इफ यू रिसीविंग मोबाइल कॉल्स इन you call 3 hours, you getting 15 calls, तो पर आवर यू गेटिंग 5 calls, तो रेट हो गया 5 calls पर आवर। इट्स ऑल्सो कॉल्ड रेट। तो रेट मीन्स एनीथिंग डिपेंड्स अपॉन टाइम, इट्स बिकम अ रेट। कोई भी टाइम पे डिपेंडेंट होगा तो वो रेट कहलाता है सिंपली। तो अब सिंपल कुछ बेसिक फॉर्म मेथड्स हैं यहाँ पर जो हम यूज करते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है डी वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिपेंड्स अपॉन द आर radius. So if radius increases in a time, तो volume also increase in the same time. Similarly, area of circle, A depends upon R. Radius increasing in particular time, तो area is also increasing. Sometimes decrease भी हो सकता है. If radius decreases, तो area is also decreases. Volume of cube, if length of cube increases, तो volume is also increases. Similarly, circumference circle, length of radius of circumference increases, लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑल्सो इंक्रीजेस। तो ये इसका थोड़ा सा कुछ बात पॉइंट्स हैं जो है टू लर्न, हम प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको आ जाएंगे। सिमिलरली एक थोड़ा सा डिफिकल्ट पार्ट एग्जाम में आता है, दैट इज रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। एग्जामिनर विल गिव यू सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर एंड आस्किंग अबाउट द वॉल्यूम इंक्रीजेस। तो यहाँ पर एक्चुअली 3 इक्वेशन इन्वॉल्व हो जाते हैं, वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड द रेडियस। तो वॉल्यूम फॉर्मूला इज 1/4/3 पाई आर क्यूब, सरफेस एरिया फॉर्मूला इज 4 pi r square. So actually this is a relation I made it, dv upon dt, change in volume, it depends upon surface area, dv upon ds and then ds upon dt. ये मैंने क्वेश्चन बनाया है, लेकिन when I solve question तो you can understand at that moment better than right now. dv upon ds की जो कुछ फॉर्मूला चेंज, दिस इज बेसिकली आई यूज द चेन रूल टू मेक द इक्वेशंस हियर। अब देखिए एक एग्जांपल से, ये एग्जांपल देखिएगा थोड़ा सा, कि एग्जांपल सेइंग the radius of a circular fungus is increasing at uniform rate of 5 centimeter per day. तो आप जब whenever you solving equation, तो आप ना अपना इंफॉर्मेशन को थोड़ा सा लिख लिया करें। तो मतलब जैसे लिखा हुआ है रेडियस, रेट कितना दिया हमारे पास, डी आर अपॉन डी टी
upon dt is equal to 5 सेंटीमीटर पर डे। तो ये हमारे पास आ गया इसका चेंज इन रेडियस इन दिस केस इन 5 सेंटीमीटर पर डे आपका फंगस इंक्रीज होता है। द क्वेश्चन इज एट व्हाट रेट द एरिया ऑफ इंक्रीज का एरिया डी ए is increasing at what rate? When the initially it was 1 centimeter. Initially the radius is, ये हमारे पास information given in the question. If you go on the diagram, so you can see, आप देख सकते हैं diagram के ऊपर. If you go on the diagram, radius is 100 centimeter. I convert meter into centimeter. So this is 100 centimeter, and this in 1 day it become 105. Basically concept ये है हमारे पास. तो ये तो डायग्रामेटिकल आई टोल्ड यू कि डायग्राम में ऐसा हो जाता है। तो फाइनल become 105. Similarly, after 2 days, 100 it become 110 centimeter. After 3 days, it become 115 centimeter. So by this concept, I'm you making actually applying differentiation of this question. So we know that area of circle A is equal to basically pi r square. So what you do when you have the area of circle, so you find first of all dA upon dr. अब मैंने क्यों यूज किया है बिकॉज हमें we have to find out dA upon dt. If I'm going to use chain rule, so this become dash multiplied by dash. So dA and dt, I break it in two parts. I separate area and time on different fraction. Area, so because the third variable we have r, dr, dA upon dr, because area depends upon the radius of the circle. If circle increases, area is also increases. So I need to find dA upon dr. So if you differentiate pi r square, so we know the value of r is equal to 1 at the beginning or 100 centimeter. 1 meter, 100, I'm converting into centimeter. Same रहे because 5 centimeter per day है, तो I make it 100. Then the value of dA upon dr basically, if you replace r is the 200 pi, and I replace this value in the dA upon dt, so this becomes dA upon dr is 200 pi. This becomes basically 200 pi. Multiply with dr of dt, which is 5. The final answer will be 200 multiplied by 5. So 1000 pi per day. तो ये हमारा आंसर आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर डे। और इफ यू वांट टू गेट कन्वर्ट इनटू मीटर, तो डिवाइडेड बाय 100 into 100, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो इट डिपेंड्स अपॉन क्वेश्चन, अगर ही इज आस्किंग यू अपॉन मीटर स्क्वायर, तो यू कैन कन्वर्ट, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग 10,000। तो दिस बिकम 0.1 पाई मीटर स्क्वायर पर डे। तो एक्चुअली ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया जो कि रेट ऑफ चेंज को कॉन्सेप्ट को दे रहा है। दोबारा समझ लें, द रेडियस ऑफ अ सर्कुलर फंगस इंक्रीज एट द यूनिफॉर्म रेट 5 सेंटीमीटर पर डे, मींस ये इट टेक्स 5 सेंटीमीटर, हमारे पास 5 सेंटीमीटर पर डे का ये कॉन्सेप्ट, ये 5 सेंटीमीटर पर डे। With the help of information, we have to find dA upon dt, and r is given here. We know that the formula of area of a circle, because the shape is circle, so you must know the formulas. So what I did, area of circle is pi r square. If you differentiate with respect to
r, 2 pi r, replace value of r, you get dA upon dr. So in this process, I got that this is actually dA upon dr. Now, chain rule is a call. I make the chain rule to find out the answer. dA upon dt is equal to dA upon dr multiplied by dr upon dt. Then I'm going to replace the value because we need to find dA upon dt. ये हमें find out करना है. We have to find out this part, and then I replace the value. Final answer is this. So this is the example of the question. I'm going to start past paper question. एक question past paper भी करा देता हूँ आपको ताकि you can further practice this question. अब देखिए, this is our question basically. In this question, if you go on the diagram, see a total surface area a centimeter square of solid cylinder. Now it's talking about the cylinder, solid cylinder with the radius r. Total surface area of the solid cylinder. If you make a cylinder here, देखिए शायद cylinder का diagram ये होता है. तो रेडियस r, इसका रेडियस r दे दिया हमारे पास, और height is 5 centimeter, and height is, this is height which is 5 centimeter. This is given in the question. You make a diagram तो आपको easy हो जाता है. Is given by area is also given. The equation of A is already given to you. Sometimes आपको खुद भी find करना पड़ता, but is given to you 2 pi r square plus 10 pi r is given to you in the question. Given that the r is increases, अब इसने खुद आपको बोला कि r is increases, it means dr upon dt is equal to 0.2 upon pi centimeter per second. The radius of this is radius increase. ये radius हमारा increase हो रहा है. It's increases 0.2 per pi centimeter. एक second में it will increase 0.2 upon pi. Then he said find the rate of increase of area. Now you have to find rate of increase of area. You have to find dA upon dt. ये आपको find out करना है. तो एट फर्स्ट आप लोग क्या करेंगे, ब्रेक डी अपॉन डी टी को ब्रेक कर लें. डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू डैश मल्टीप्लाई बाय डैश. दिस इज द बेस्ट मेथड. डैश, तो डी ए रिटन हियर and dt other fraction denominator, and then third variable is radius r, dr here, dr there. So it's become chain rule. Now you need dA upon dr. You need dA upon dr. So you differentiate this equation dA upon dr, which is equal to 4 pi r plus 10 pi. ये हमारे पास dA upon. Now the value of r is 6. Initially r is 6. इसने बोला कि r is 6. Initially it was 6. तो replace 6 here. तो ये रहेगा 6 4 are 24 pi plus 10 pi. 6 और 24 10 pi. तो ये हमारे पास हो जाएगा 10 pi. तो this becomes 34 pi. This becomes 34 pi. यहां तक आपको you understand? I think this is 10, 20 plus 10 is 34 pi. I got the value of dA upon dr, which is 34 pi. Now replace this value in the equation which I made here. dA upon dt, d upon d 34, dr upon dt 0.2. तो I can make the equation. This become हो जाएगा हमारे पास. देखिएगा, dA upon dr is 34 pi into dr upon dt 0.2 upon pi. What happened? Pi will cancel out. आप देखेंगे तो this
pi and that pi is cancel out. The final answer will be give you actually 34 multiplied by 2, 68. And then decimal place 6.8, because the unit is using centimeter, so you also use centimeter. You also use centimeter per second. This is the method. So this is our final answer. The summary again of the question is, it's a past paper book जो मैंने आपको दिया है, book 1, past paper book से, it's a book 1, page 127, question 2. Total surface area a centimeter square. The solid cylinder with the radius r. Solid cylinder is also given to you. Equation भी given दे दिया है इसमें. R is 6 initially is given. Height is 5 is given. The area is pi r square. Yes, area is given to you in this equation. Now we have to find dA upon dt. So I made this equation here. So I need dA upon dr and dr upon dt. Dr upon dt is also given in the question. This is given in the question. So I need to find only dA upon dr. So to find dA upon dr, I differentiated the equation and find out the final answer when r is 6. Putting here r is 6. So you get the 34 pi. And then replace these information in the actual equation. The chain rule you applied here, final answer simply 6.8. One more question for you. Again, this is a page 127, question 7 from your past paper book, June 12, paper 1, question number 10. June 12, 1 component है इसका, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है. इट्स एक्सपोनेंशियल क्वेश्चन बेसिकली. आप देखिए, द वेरिएबल x एंड y आर कनेक्टेड बाय द इक्वेशन इज गिवन टू यू. अगेन एक इक्वेशन गिवन दे दिया आपको, एंड देन फाइंड dy by dx. तो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट. dy by dx तो बहुत सिंपली फाइंड हो जाता है, बिकॉज e पावर 2x मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस e पावर माइनस 2x मल्टीप्लाई बाय माइनस 2. ये तो सिंपली हमने करा था पहले. तो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, if you simplify that part, so this become 2 common or 2e power 2x minus 2e power minus 2x. This is for exam में आपका 2 marks का है. You can do easily, no matter in this. अब आगे बोलता है, next part of the question is, by using substitution e power 2x, find when dy by dx is 3. So he said dy by x is 3, so you can do dy by x. I am doing part 2. 3 is equal to e power. अब देखें, इसने खुद कह दिया कि e is equal to 2 power x, तो इसको ले लें u प्लस, और बल्कि -2 कर लें इसको. डू इट -2 बिकॉज इक्वेशन हमारा ये इक्वेशन था, तो हम इसको ले सकते हैं -2 e पावर -u. तो यहां पर हमने इसको चेंज कर लिया. I replaced all the values here. Now what you do, you have to, अब आपके यहाँ पर basically simple algebra involved है. How can you simplify this question? 3, what you do, 2 e power u minus 2 e power u. ये हमने कर लिया. I make the power negative, power become positive. Now you whole equation multiply by e power u whole, so this become 3 multiplied by e power u is equal to 2 e power 2u हो जाएगा ये -2.
ये हमने फर्दर सिंप्लीफाई कर लिया इसको. नाउ अरेंज इन ऑर्डर. तो 2e⁻2u minus 3e⁻u minus 2 is equal to 0. This basically become quadratic equation. This become quadratic equation. If you factorize this, तो this factorization will be, अब आपको थोड़ा सा ये प्रैक्टिस करनी चाहिए how to factorize the equation. तो what you do, 2e⁻2u minus, हमारे पास हो जाता है जी -4 प्लस -4e⁻u plus e⁻u minus 2 is equal to 0. What I did, I split the middle term. मैंने इसका middle term split किया. तो now there is a common part. 2 e⁻u is common here. So what's left? e⁻u minus 2. फिर यह +1 e⁻u minus 2 is equal to 0. The final answer factors are e⁻2 minus 2, 2e⁻u plus 1 is equal to 0. तो e⁻u is equal to 2, e⁻u is equal to minus half. ये हमारे पास e⁻u. Now I can replace u is basically what is u. हमने शो किया था कि u is e⁻2x. चलिए ओके. तो मैंने बेसिकली इसको लिया है, थोड़ा डिफरेंट किया है अपने उससे. तो ये e⁻2x is equal to 2, e⁻2x is equal to minus half. देखें जो मार्किंग स्कीम में है दैट बिकम सेम, वैसे ही आ गया. तो हाउ कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ x? अब x का वैल्यू कैसे मिलेगा आपको? इफ यू अप्लाइंग ln ऑन बोथ साइड, तो 2x ln e is equal to ln 2. बट यहाँ यू कांट अप्लाई ln इन दिस केस में. ln अप्लाई नहीं सकता, नेगेटिव नंबर है, तो यू कांट अप्लाई ln. तो नॉट पॉसिबल, ये नॉट पॉसिबल हो जाएगा. और ln ए इज 1 होता है. तो सिंपली, और द अदर मेथड इज ऑल्सो वी कैन यूज इस इंस्टेड ऑफ दिस पार्ट में एक चीज और भी कर सकता हूँ. इसको मैं जगह ये कर सकता हूँ, इफ आई मेक द पावर 1, तो सिंपली बट ln वाला तो ये आई डोंट थिंक, इसको मैं कैंसिल कर, सॉरी दोबारा करता हूँ इस पार्ट को, मुझे लग रहा है कुछ. तो अब मैं जरा, ये मेरा फाइंड हुआ है e⁻2x इज इक्वल टू. तो व्हाट्स द क्वेश्चन इज, हमारा क्वेश्चन क्या, e⁻2x मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ y. अच्छा, ही सेइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ y. तो y नाउ वी हैव e⁻2x. तो जस्ट डोंट नीड टू डू. y हमारे पास क्या चीज है, y का इक्वेशन है. y इज इक्वल टू, वी हैव द इक्वेशन y इज इक्वल टू, मैं दोबारा लिखता हूँ y का इक्वेशन ताकि फिर इजी रहे हमारे पास. y इज इक्वल टू e⁻2x e⁻2x प्लस e⁻−2x. तो ये दिस बिकम बेसिकली हमारे पास हो जाएगा e⁻2x इज 2 और प्लस e⁻−1. तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1/2. तो 2 टू जा 4 प्लस 5, 5/2. तो वैल्यू ऑफ y इज 5/2 आए. वैल्यू ऑफ y इज 5/2. लास्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज पार्ट 3 करते हैं.
In part 3, given that x decreases at the rate 0.5 unit per second. Now part 3 is the word is decreasing here or 0.5. तो हम इसको we can write it down here कि dx upon dt हम यहाँ कर सकते हैं what is given here dx upon dt minus 0.5. dx upon dt is minus 0. Because 0.5 unit per second. Find the rate of change of y when x is equal to 1. You have to find dy upon dt x is equal to 1. This is a question actually. x का वैल्यू 1 दे दिया है आपको और x rate of change when x is equal to 1. तो if you break this dy upon dt, again आपको ब्रेकअप देना पड़ेगा. dy upon dt is equal to dash multiply by dash dt here, dy there. ये थोड़ा सा बेस्ट. अब थर्ड वेरिएबल इज x, तो dx ये हमारे पास. तो नाउ वी हैव टू फाइंड dy by dx. तो dy by dx एक्चुअली इक्वेशन विल बी, आपने दिखाया था 2e पावर 2x minus 2 e पावर तो ये हमारे पास हो गया -2 My pen is stopped here to writing. Why? I think is a issue of net. So -2 इशू ऑफ नेट. थोड़ा सा मेरा नेट गड़बड़ कर गया है जी, ये ताकि लिखने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है. देखो जी 2x और जी -2x ई पावर. तो यहाँ थोड़ा मुझे नेट में गड़बड़ की है भाई लिखने में. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, x इज 1, तो 2e पावर 1 -2 e पावर -2. ये हमारे पास dy बाई dx का वैल्यू आया है. और हम क्या कर सकते हैं इसके बाद, तो आई रिप्लेस द वैल्यूज ऑफ x नाउ. आप यू कैन यूज योर टू फाइंड द आंसर of this portion. So by replacing here, I'm going to replace is equal to 2e power 2 -2 and then multiply by which is 0.5. हमारे पास जो वैल्यू है दिस इज 0.5 minus 0.5. तो योर फाइनल आंसर इफ यू यूज कैलकुलेटर, तो व्हाट यू गेटिंग आंसर बेसिकली ये दिस इज अ माइनस साइन, ये माइनस साइन है हमारे पास. तो हो जाएगा जी माइनस, और जो यू कैन यूज
calculator to find out the answer. The value of E is 2.71, or you can use calculator. The final answer will be 7.25 minus 7.25. ये हमारा, this become final answer. तो now thank you very much for your watching this video. आपको मैं रेट ऑफ चेंज के 2 क्वेश्चन करा दिए हैं, एक एग्जाम्पल करा दिया है, लेक्चर दे दिया है. तो विल कंटिन्यू इन द क्लास ऑल्सो, और यहाँ से आपको प्रैक्टिस मिल जाएगा थोड़ा सा क्वेश्चन का. तो जरा देखिएगा इसको. अगेन आई समराइज माई ऑल द क्वेश्चन अगेन. के वी हैव गिवन, हमें गिवन दिया था उसने कि जी वी हैव द क्वेश्चन गिवन हियर. ये इक्वेशन था हमारे पास इनिशियली. इस इक्वेशन को हमने डिफरेंशिएट किया तो वी गेट द फाइनल आंसर ऑफ दिस पार्ट. ये हमें मिल गया. और नाउ ये हमने रिप्लेस किया एक वैल्यू, थोड़ा सा मैंने अपने डिफरेंट वे में किया है ताकि थोड़ा आपको अलग लगे. तो dy/d3 गिवन था, तो with the help of this differentiation and the substitution we get the value of y, which is 5/2. ये सारे प्रोसेस यूज किया, यूज द होल प्रोसेस, ये मैंने यूज किया है टू फाइंड आउट द आंसर. आप इसको देख लीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी, तो यू कैन गेट इजीली. देन थर्ड पार्ट के लिए आई, और आई एम रिप्लेसिंग द वैल्यूज. जैसे dy/dt आई ब्रेक इन द टू पार्ट, ये मैं ब्रेक किया, रिप्लेस किया इसका वैल्यू यहाँ पर 0.5 से इसको माइनस मल्टीप्लाई कर दिया, तो फाइनल this become final answer. Okay, thank you very much for you watching this video. Allah Hafiz.